Assalamualaikum everyone, this is Huma, your English subject instructor from tutoria.pk. I welcome you all in this video where I'm going to explain chapter number 9 जिसका नाम है The Foolish Quack. Now let's move on to the introduction of this story. तो इस स्टोरी को ट्रांसलेट किया है चार्ल्स विनेटन में, जो कि नवंबर 27, 1843 को पैदा हुए थे. He worked as a senior chaplain to the Indian government. He worked on the genre of folklores, anecdotes, legends, military and history. He also played his role effectively as an author, composer, editor and honoree. He died in November 16, 1923. Now let's move on to the introduction of this story. तो ये स्टोरी बेसिकली एक फॉक टेल है, जिसका मतलब ये है कि फॉक टेल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द विजडम्स ऑफ द सेंचुरीज. और फॉक टेल्स क्लासिक होती हैं, और जब हम किसी चीज़ को क्लासिक कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसे हक़ाइक़ की बात करते हैं जो कि आने वाले तमाम वक्तों के लिए दुरुस्त साबित हों. इसके अलावा ये कहानी एक मज़ाहिया अंदाज में लिखी गई है. अगर हम इस स्टोरी के टाइटल पे गौर करें जो कि है द फुलिश क्वैक, तो इसका मतलब ये होता है बेवकूफ़ नीम हकीम. और इसी तरह अगर हम इस वर्ड क्वैक पे गौर करें तो ये एक फ़नी साउंड क्रिएट करता है. एंड इट हैज़ टू मीनिंग्स. द फर्स्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्वैक इज़ दैट अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, while the second meaning of this word is that a person who dishonestly claims to have knowledge, skills and education in some specific field, that is field of education. Now let's move on to the explanation of scene 1 along with its complex words as well. So in scene 1 we have only 3 complex words. The first word is clump, जिसे उर्दू में झुंड कहते हैं, while in English it means group. The second word is struck. उर्दू में इसका मतलब है मारना. In English it means hit. The third word in the scene 1 is loosening. उर्दू में इसका मतलब है खोल देना, while in English it means release. Now let's move on to the explanation. तो सीन 1 कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है. राइटर इस तरह से बात करता है कि शाम का वक्त होता है और कुछ ऊँट के मालिक अपने ऊँटों के लिए कुछ दरख्तों के झुंड के नीचे आराम करते हैं और वो अपने ऊँटों को खोल देते हैं ताकि वो चर सकें. अब होता यूँ है कि उनमें से एक ऊँट खरबूजे के बाग में चला जाता है और वहाँ वो एक पूरा खरबूजा निगल लेता है जो कि उसके गले में अटक जाता है. अब इसकी वजह से ऊँट को बहुत तकलीफ़ होती है, जबकि उसका मालिक इस डर में चला जाता है कि कहीं वो अपना ऊँट गंवा ना दे. बट देन ही गॉट एन आइडिया. ही सिंपली टुक अ ब्लैंकेट अलॉन्ग विद अ हैमर एंड ही टाइड दैट ब्लैंकेट अराउंड द नेक. और फिर वो बहुत ज़ोर से उसकी गर्दन पे ज़रब लगाता है, जिसकी वजह से वो खरबूजा टूट जाता है और उसको ऊँट आराम सुकून से निगल लेता है. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सीन 1. थैंक यू.